Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully all of you will be fine, safe and healthy. This is your English class. I'm Sana. Today we are going to learn about the articles. But before moving to our today's lesson, let's recite the dua. We usually recite and we daily recite. अभी तक तो आपको सबको याद भी हो गई होगी. So let's just recite it. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. So as I already told you that we are going to learn about the articles. You will open your page number 20 and first of all you will write the date. Today is 6th of August and the day is Friday, but I have prepared a very quick and easy concept of articles. So let's just have a review about the what is articles. I know you have already familiar with the articles because we have done this topic. This topic is so common that when we were in one class we have familiar with the articles, that we have had familiar, हम familiar हो जाते हैं, we become familiar with the कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल्स. और हमें बड़ी दफ़ा मैम्स करवाती हैं, है ना. ऐसे ये क्लास बहुत दफ़ा हम करते हैं. ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी इंक्लूड करते हैं क्लास कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी यूजली कहा जाता है कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर. सो 9 आर्टिकल्स को भी इंक्लूड किया जाता है. ए एंड द, ए एन को हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स, एंड द इज़ कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल्स. सो लेट्स जस्ट हैव अ रिव्यू दैट व्हाट इज़ an and where to use an. An used with a singular noun, usually with a singular noun, and the is used with both singular and plural nouns. So singular noun means one person, one place, one animal or a thing, as the name is indicating, and singular and plural means that it can use with the both nouns. Okay, article A is seen with nouns that begin with the consonants. I know this concept is already familiar with you. आपको पहले से इसका मालूम होगा. And when we specify a thing, a particular thing, वही चीज़ को जब हम specify कर देते हैं तो वहाँ पे हम da यूज़ कर देते हैं. For examples, द रेजर्स, द बाइसाइकल्स. ओके, लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफाई ना कर रहे हो, या हम पिछली चीज़ के साथ इसको रिलेट ना कर रहे हो. और थर्ड थिंग इज़ व्हेन द स्पीकर इज़ वांट टू emphasize on that thing. अगर वो उसको emphasize and emphasis both are correct. Okay, उसको emphasize ना कर रहे हो तो भी तो भी हम उसके साथ दा यूज़ करते हैं. So these are the some cases. हम जब when you will be back, or if you want to share when you will be back inshallah on Monday, we will recall this again the concept, and you will tell me and you will share with me your examples of a and the when we have a revision of this lesson.